Welcome students. Today we will start a new unit which is called as a reproduction. In this unit it is included in your NCERT syllabus as well as your state board syllabus, and it includes 4 lessons, namely general reproduction, plant reproduction, human reproduction and a reproductive health. Before we actually start with any of the lesson, first we must understand what is reproduction. Definition wise, reproduction is a process by which living organisms produce organisms or offsprings like themselves. ठीक है. So students, what is reproduction? It is a process by which living organisms produce organisms or offsprings like themselves. ऐसी प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं. ठीक है. नाउ there are different methods of reproduction. ठीक है. Organisms practice different types of methods to produce organisms like their own. So which are the main types of reproduction? There are two types of reproduction. The first one is considered to be sexual reproduction and the another one is considered to be a asexual reproduction. Now, what is sexual and asexual reproduction? First of all, asexual reproduction is a very basic type of reproduction. और अगर हम इसे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो asexual reproduction might have come earlier than the sexual reproduction. ठीक है. The differences between sexual and asexual reproduction are that asexual reproduction is responsible for clonal production. ठीक है. अब क्लोनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी क्लोन्स ऑफ ईच अदर इफ दे हैव अ सेम जीनोटाइप और आइडेंटिकल जीनोटाइप. दो लोगों का, दो इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है तो उनको हम एक दूसरे के क्लोन्स बोलते हैं. ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर एक प्लांट का आप डंडी काट के अगर लगाते हो तो जो दो प्लांट्स आपको मिलेंगे वो दोनों का जीनोटाइप जो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेगा, तो उन लोगों को हम क्लोन्स बोलेंगे. लेकिन वही एक ही माँ के जन्मे हुए अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, और वो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है तो इसका मतलब दे आर नॉट क्लोन्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेंगे एवरी टाइम देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स. ठीक है. और वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन क्लोनल प्रोडक्शन. Now, why it is responsible for non-clonal production? Because there is a process of meiosis which is involved in a sexual reproduction. और हमें पता है कि meiosis जब होता है then recombination takes place. And because of recombination, the genotype get altered and hence it is responsible for non-clonal production. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है हमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is responsible for non-clonal production and asexual reproduction is responsible for clonal production. Asexual reproduction में जो key event होता है या cell division होता है that is of a mitosis type. But sexual reproduction cannot be completed without meiosis. Meiosis is the most important thing which takes place during sexual reproduction during gametogenesis. But on the contrary, mitosis also takes place during sexual reproduction. अब mitosis और meiosis का कहाँ पर क्या रोल होता है that we will understand while understanding this unit. But here we must understand that sexual reproduction is marked by the meiosis and asexual reproduction is marked by the mitosis. Then again, sexual reproduction is biparental. That means two parents, male and female, are involved in a sexual reproduction. Unless and until two parents produce gametes, the sexual reproduction cannot complete. But on the other hand, asexual reproduction is uniparental. That means there is not a requirement of two male and female. ठीक है.
asexual reproduction is responsible for production of non variants. ठीक है, मतलब वेरिएशन आने का कोई स्कोप नहीं होता है अगर वो क्लोनल प्रोडक्शन है. ऑन द कॉन्ट्ररी, sexual reproduction will not ever produce identical individuals. Every individual produced by sexual reproduction is variant. दो ऑफस्प्रिंग्स में, दो सिबलिंग्स में हमेशा जेनेटिक वेरिएशन रहेगा, एंड दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट्स. And as it is responsible for production of variants, or it is responsible for variations, it supports the evolution, है ना, stepwise changes which requires variation in the generation that can be brought about by the sexual reproduction, which cannot be introduced by sexual reproduction because it produces clonal progeny and identical offsprings, and that is why it does not support the process of evolution. So students, here we have seen a brief differences between sexual and asexual reproduction. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज ऑफ अ सेक्सुअल टाइप, और वही अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं हम प्लांट्स में, या बाइनरी फिजन परफॉर्म्ड बाय अ बैक्टीरिया और अमीबा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस दे आर asexual type of reproduction. ठीक है, सो we will start with the lesson which is included in this unit, which is a human reproduction. ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो फीचर्स है उनके बारे में हमें जानना है. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स बोथ द मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन. ठीक है, ऊपर के जितने भी फीचर्स हमने रिप्रोडक्शन के देखे हैं, ऑल दोज फीचर्स आर शोन बाय द ह्यूमन. ठीक है, देन इट इज बायपैरेंटल and human are bisexual, that means there is a distinct male and female present. Again, humans से a sexual dimorphism. Dimorphism का मतलब होता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है ना, और जैसे कि हमें पता है मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नली, दैट मीन्स ह्यूमंस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है, डायमॉर्फिज्म मतलब इनके मेल और फीमेल जो होते हैं वो हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ह्यूमंस दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे शो अ बायपैरेंटल रिप्रोडक्शन, they are bisexual and they are sexually dimorphic, that means distinct male and female is present. ठीक है, now here there is a brief overview of a human reproduction. हमने देखा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मियोसिस इज अ की इवेंट. मियोसिस जो है ये एक की इवेंट होता है, दैट इज बिकॉज genetic constitution of human, whether it is male or female, it is always 2n is equal to 46 and 2n is equal to 46. Definitely whenever there is a production of a offsprings, we also want a genetic constitution like a parents which is 2n is equal to 46. It can only be achieved if this male and female they only contribute half of their genotype, and that is why they undergo this process of meiosis or gametogenesis, through which they produces a haploid gametes, like male produces haploid sperm and female produces haploid egg, and this sperm and egg they unite with each other by the process called as a fertilization, resulting in the production of a new offspring or a new offspring which is having a genetic constitution that is that of a parents. ठीक है, so in an overview human reproduction can be explained as male and female produces haploid gametes by the process called as a gametogenesis. These gametes they get fertilized to form a zygote. This zygote undergo post fertilization changes or embryonal development to produce a new organism. ठीक है, now the process of gametogenesis is important in human reproduction,
and to perform gametogenesis a definite system is dedicated to the reproduction, and the system is called as a reproductive system. There are two types of reproductive systems. One is a male reproductive system which is present in male, and another one is a female reproductive system. Now whichever is a reproductive system, whether it is male reproductive system or female reproductive system, it performs certain basic functions, like there is a production of gametes. If there is a reproductive system, it must produce gametes. ठीक है? Then it must facilitate the process of fertilization. Finally, it also supports or facilitates the development of a developing embryo or fertilized zygote. These are certain functions which must perform by the reproductive system. In male and female, this reproductive system completes all these functions, and unlike all the system like your circulatory system or digestive system, any system made up of a different organs. Similarly, reproductive system made up of organs called as the sex organs. And the sex organs are of two types: primary sex organs and a secondary sex organs. So depending upon their functions, they are divided as a primary sex organs and secondary sex organs. Primary sex organs are the organs which are responsible for production of gametes, that is eggs and sperm, and also responsible for production of sex hormones like testosterone in male and estrogen in female. तो जब भी हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होगा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन. तो वहीं पे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनका काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को असिस्ट करना, उनको गैमेटोजेनेसिस में और हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करना. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.